हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का लेसन नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड की बात करेंगे। देयर आर 3 मेन स्पेयर्स ऑन द अर्थ। दीज आर हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, इथियोस्फीयर यानी लैंड एंड एटमॉस्फेयर यानी एयर। In all these spheres, living organisms are seen. The living organisms together in all these are spheres continuous biosphere. एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? एटमॉस्फेयर यानी एयर, वो कौन से कलर का रहता है? स्काई ब्लू। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर यानी डीप ओशन ब्लू, और लिथोस्फीयर यानी लैंड, वो टेराकोटा। ठीक है। और इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द सरफेस, यानी वाटर अर्थ का 71% कवर कर रहा है, और लिथोस्फीयर कवर 29 ऑफ द सरफेस। 29% कौन कर रहा है? लैंड कवर कर रहा है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर यानी द इनविजिबल शील्ड की बात करेंगे। The earth is surrounded by atmosphere which is made up of air. Air is a mixture of gases. The continuous of air are as follows. एयर में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टाइप्स ऑफ इनर गैसेस। कौन से है वो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट particle. The proportion of gases in different spheres of the earth is as follows. Troposphere 80% of the total mass of gas in the air. Stratosphere 19% of the total mass of the gases in the air. Mesosphere proportion of the gas is less. Ionosphere proportion of the gas is still lesser. Exosphere no gas found. The amount of the gases is highest near the surface of the earth. As we go higher and higher from the surface, the proportion of the gases goes on decrease. Air is rare in high altitude. Uses of the gases in the air. पहला गैस है नाइट्रोजन। उसका यूज क्या है? बिल्डिंग अप प्रोटीन्स इन लिविंग बीइंग, प्रोडक्शन ऑफ द अमोनोटा, एट्राइट पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ्स। ऑक्सीजन का यूज क्या है? रेस्पिरेशन एंड कॉम्बिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, इन फायर एग्जिस्टेंट। एरोगन का कहाँ यूज होता है? इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हेलियम का यूज क्या होता है? ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड जनरेट लिफ्ट इन एयर स्पेस। नियो का यूज क्या होता है? डेकोरेटिव लाइट एंड स्ट्रीट लाइट। क्रेपेन का यूज क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब। एक्सियन का यूज क्या होता है? फ्लैश फोटोग्राफी। एयर पोल्यूशन व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड थ्रू द combustion are released into the air, it causes a air pollution. Pollution like smoke disturb the balance between constituents of the air, which is turn causes hazardous effect on living being. Air pollution is caused by vehicle, industries and other sources. Whatever there is a incomplete components of fuel. Air pollution is increasing day by day. Harmful air pollution: nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide and salt. In the lower part of the stratosphere there is a layer of ozone यानी O3. Ozone layer prevents the harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth's surface. ओजोन लेयर क्या करती है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट किरण है तो उससे अपना सुरक्षा करती है। द हार्मफुल केमिकल सच एज द कार्बन टेराक्साइड एंड द क्लोरोफेक कैन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर. These gases are used in the conditioner and refrigerator. Ozone Protection Day is celebrated on 16 September every year. All over the world,
This is for making people aware to importance of ozone layer. अब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे. 97% of the water in the sea and from sea and ocean is अनयूजेबल ड्यू टू द सेलिनिटी, यानी वो उसके अंदर नमक रहता है, खारा रहता है, इसलिए हम वो वाटर पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर एंड आइस वाटर 2.7% फ्रोजन और ट्रैप. ठीक है. 0.3% पोर्टेबल फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. Water is needed for survival of every living organism. Amount of water needed for every organism depends on its size of the body. For smooth functioning of our body, we needed 3 to 4 liter water daily. Hydrogen gas upon burning in air can from water. Water is available in 3 different states in nature. Water is colorless, tasteless and odorless, यानी इसमें स्मेल नहीं रहता है. Since many substances can dissolve in it, it is also called universal solvent. There is a high proportion of water in blood of the animal and the shape of the plant. It is said that water is life because no living thing can survive without water. For drinking purpose, only very small quantity of water is left on the earth. All the water on the earth is regulated through the water cycle. Sun's heat evaporate water from the ocean. These water evaporate condition after reaching the sky and fall back on the earth in the form of rains. Rainwater creates fresh water sources on the earth. Due to uncontrolled use of increasing population, industries and farming, water is in short supply. Use sparingly. Minimize waste at the individual level. Second है block and terracotta. Trap moving water and allow to step into the ground water store. Third है store efficiently. Capture water where possible. Fourth है reuse continuously. Stored water does not become state immediately. Maximum its utility. अब हम लिथोस्फेयर यानी लैंड की बात करेंगे. लेयर ऑफ द सॉइल. द सीक्वेंस with which the layer of soil are present from top to bottom are as follows: humus, immeritious soil, layer of soil and small rocks and bedrocks. First है humus. The topmost layer of the soil is formed by the decomposition of the remain of plant and animals. This is known as humus. Second है immeritious soil, full of sand soil, small stones, worms and insects. तीसरा लेयर है soil and small rocks, the transition zone with the decreasing soil and increasing rocks fragment. चौथा है bed rocks, the foundational solid layer determined both the color and texture of the soil above it based on its mineral content. The millennial millimeter. इसमें 3 steps हैं. The formation process. Bedrocks breaks down slowly via weathering, heat, cold, wind, rain, microbes, plants, roots, etc. The matrix. It takes approximately 1000 years to form just a 2.5 centimeter thick layer of mature soil. Third है the thread. These millennial works can be destroyed in a remarkable short period by flood, storms and a human activity like mining. Fossil fuels. The forests on the land were buried underground due to upheavals caused in the earth's crust in past. This happened many millennium of years ago. From the remains of the living thing, the fossil fuel were created naturally due to pressure and heat.
Petrol, diesel, kerosene, paraffin, tar and wax can be obtained from this fossil fuel. The best remedy to prevent land erosion in increasing green cover, grass, trees and bushes act as the structural anchor for the topsoil. Found in the top layer of the fertility soil, compressing 33% to 50%, humus supplies nutrients, aerates and the soil and holds water, ensuring the green cover survives to protect the land. System monitoring, the IMD. In order to study the weather of Indian subcontinent, Indian Meteorological Department was established in 1875. The institute observed the weather and make the weather and rain forecast, conducting researching related to the changes in the weather and study in development related global warming. तो बच्चों बताओ कैसा लगा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।